So today we are going to see the remaining part of your vitamins and we'll see the minerals. GPAT Niper DI Pharmacist point of view. These two chapters again are very important. If you see previous papers, you will find the questions from these chapters. So we have seen the vitamin chapter in the previous session, and we have completed all the vitamins. But sometimes they used to ask the question like this: which kind of ring is present in this vitamin, or which kind of heterocyclic arrangement is present in this particular vitamin. So that's why I have made one table for you, and we'll revise that table, and so that if such kind of questions they ask, you will be able to answer. अपन ने विटामिन चैप्टर पूरा देखा है विटामिन का पूरा what are the fat soluble vitamin, what are the water soluble vitamins. We have seen that. We have also seen their deficiency disorders, their recommended dietary allowances and all that. Okay, we have completed all that. That means in the simple sense we have completed the vitamin chapter. लेकिन विटामिन चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में भी एक चार्ट बना के यहाँ पे मैं प्रेजेंट करूंगा आपको, ताकि आपको विटामिन का स्ट्रक्चर जो है और उसका जो रिंग प्रेजेंट होता है उसमें उसके ऊपर कभी क्वेश्चन आया तो उसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए. वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट. ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पे बोलूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट रिंग्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट, स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन, डिफरेंट विटामिन और उसमें कौन सा रिंग है. वी हैव सीन ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ विटामिन एंड ऑल दैट, but still I will highlight. So first, lipid soluble vitamin. So you know that with lipid soluble vitamins means these vitamins are soluble in the lipids only. These vitamins are soluble in the fat only. Okay, your vitamin A, D, E and K. These five vitamins. Vitamin A, D, E, K. Vitamin A, D, E, K. These are the lipid soluble vitamin. Now first vitamin A. So what is the chemistry? So this vitamin A is made up of three components. Okay, इसमें इसका स्ट्रक्चर में क्या रहेगा? Three components, तीन component रहेंगे इसके स्ट्रक्चर. So first component is nothing but the a trimethyl cyclohexanyl ring. Trimethyl cyclohexanyl ring और उसको अपन बोलते हैं बीटा आयोनोन रिंग. उसको क्या बोलते हैं अपन? बीटा आयोनोन रिंग. So it is made of a beta ion ring. Then isoprenoid units और polyene. जो isoprenoid unit साइड में जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा जो है आइसोप्रेनाइड स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे आइसोप्रेनाइड. So your vitamin A is made up of three components. First component is a your beta ion ring, that is a trimethyl cyclohexanyl ring. तो ऐसा पूछेंगे कि बीटा आयनोन रिंग नहीं देंगे आपको ऑप्शन में, और ऑप्शन में देंगे ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनल रिंग. तो ये इट इज आल्सो नोन एज अ बीटा आयनोन रिंग. सो ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनल रिंग और बीटा आयनोन रिंग. देन ऑल ट्रांस आइसोप्रेनाइड यूनिट. जो आइसोप्रेन यूनिट्स है विटामिन ए में, जो साइड चेन में बोला था मैंने जो पढ़ा हुआ है. सो दैट आइसोप्रेनाइड यूनिट हैज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांस, नॉट अ सिस. सो ऑल ट्रांस आइसोप्रेनाइड यूनिट, that is known as a polyene or isoprenate. Four double bonds containing four double bonds. So these all trans isoprenate unit containing four double bonds. And the third component is nothing but the functional group. ठीक है, थर्ड कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट क्या है कि बीटा आयनोन रिंग. दूसरा कंपोनेंट होता है आपका आइसोप्रेनाइड साइड चेन. एंड तीसरा कंपोनेंट होता है आपका उसका फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो पहला कंपोनेंट तो हो गया आपका बीटा आयनोन रिंग, ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनल रिंग. ठीक है, दूसरा कंपोनेंट क्या है? दूसरा कंपोनेंट है आपका आइसोप्रेनाइड रिंग. तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ऑल ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन. सो ऑल ट्रांस आइसोप्रेनाइड chain with the four double bonds, and third component is a functional group. So on the basis of that we have seen, so there are different vitamins of vitamin A. So अगर विटामिन ए के स्ट्रक्चर में अल्कोहल है, OH है, that is known as the retinol. Sorry, that is known as the retinol. Okay, so if retinol is there, that means alcohol is there. Okay, retinol means aldehyde function group, and then retinoic acid means acid function group. ठीक है, रेटिनोइक एसिड मतलब एसिड फंक्शन ग्रुप. सो आउट ऑफ दैट रेटिनॉल मतलब क्या? एल्डिहाइड. रेटिनॉल में एल्डिहाइड है, उसको बोलेंगे उसको. सो रेटिनॉल इज आल्सो नोन एज रेटिनिन. रेटिनॉल इज आल्सो नोन एज रेटिनिन. रेटिनॉल means alcohol function, retinol means aldehyde function, retinoic acid means alcohol function. So retinoic acid means acid function. So these are the three structural components: beta ion ring, isoprenate unit and functional group. So beta ion ring means क्या है?
trimethyl cyclohexanyl ring. ठीक है, that is known as a beta ionic ring. All trans isoprenide unit containing 4 double bonds. Vitamins, that means last component, that is a functional group. So alcohol is a functional group. It is known as a retinol, which is the active form of vitamin A. We have seen that. Then retinol means aldehyde containing functional group. Okay, retinoic acid means, now we have seen the three component of vitamin A. Vitamin A के स्ट्रक्चर में तीन कंपोनेंट होते हैं. जो कैरोटीन होता है, अल्फा बीटा एंड गामा कैरोटीन. So there are carotenes, alpha beta and gamma carotenes. Carotenes are known as a provitamin A. Provitamin A किसको बोलेंगे? कैरोटीन को बोलेंगे. Alpha beta and gamma carotenes are known as a provitamin A. Alpha beta and gamma carotenes, alpha beta gamma carotenes are known as a provitamin A. So molecular formula है उसका C14H56. So out of that, beta carotene gives two molecules of vitamin A after hydrolysis in the body. ठीक है, आपके बॉडी में क्या होगा? विटामिन ए का, सॉरी, प्रोविटामिन ए, दैट मीन्स बीटा कैरोटीन का क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा आपके बॉडी में, और आपको क्या मिलेंगे? 2 molecules of vitamin A. So beta carotene on hydrolysis in your body will give you 2 molecules of vitamin A. Okay, so beta carotene is known as a provitamin A. तो वैसे कैरोटीन का तीन फॉर्म होता है, अल्फा बीटा एंड गामा कैरोटीन. बट आप ह्यूमंस में, मतलब जो ह्यूमंस होते हैं, humans and herbivorous animals, in that, so only enzymes that can hydrolyze the beta carotene is available. So alpha and gamma carotene is not true provitamin A. So true provitamin A is a beta carotene which on hydrolysis will give you 2 moles of vitamin A, whereas alpha and gamma carotene give only 1 mole of vitamin A. तो प्रोविटामिन ए देखो, बीटा कैरोटीन अगर पूछा है आपको, तो उन्होंने अगर बीटा कैरोटीन पूछा है, बीटा कैरोटीन कितना विटामिन ए देगा आपको? तो बीटा कैरोटीन देगा आपको 2 मोल्स ऑफ विटामिन ए. ठीक है, और अल्फा एंड गामा कैरोटीन कितना देगा? अल्फा एंड गामा कैरोटीन विल गिव यू 1 मोलिक्यूल ऑफ विटामिन ए. सो ये याद रखो विटामिन ए के बारे में. विटामिन ए के बारे में स्ट्रक्चर, उसका केमिस्ट्री, और प्रोविटामिन ए क्या है. प्रोविटामिन ए, बीटा कैरोटीन इज नोन एज अ प्रोविटामिन ए. ये थोड़ा सा एडिशनल है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है विटामिन ए के बारे में. उसका पूरा बाकी जो है विटामिन का स्ट्रक्चर, आपने स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री, रिकमेंडेड डाइट, एलर्जेंस, बायोकेमिकल फंक्शन, देन उसका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स वी हैव सीन इन द. सो विटामिन ए, रिमेंबर प्रोविटामिन ए मीन्स बीटा कैरोटीन एंड दैट विल गिव यू 2 molecules of vitamin A. Then alpha carotene and gamma carotene will give you 1 molecule of vitamin A respectively. This was vitamin A. Its deficiency is nothing but the night blindness. We have seen that. What is rhodopsin cycle? What is night? What is white hotspot? We have seen that. Next one is vitamin D. Next one is vitamin D, and vitamin D, it is known as a cholecalciferol. It is known as a cholecalciferol, and mostly it is found in the fish liver oil, and some part of this vitamin D is also produced under the human skin. Okay, so remember, active form of vitamin D is a calcitriol 24-25 dihydrocalcicholecalciferol, that is known as a calcitriol, and that is a active form of vitamin D. We have seen that. Now इसमें क्या है कि provitamin D, that is ergosterol and cholecalciferol, these are known as a provitamin D. Cholecalciferol and ergosterol both are known as a provitamin D. They are not an active form of vitamin. So ergosterol is found in the plants, whereas the cholecalciferol is found in the animals. But cholecalciferol will be converted into active form in the body. So there will be hydroxylation at 24th position of vitamin D and 25th position of vitamin D. So there is a hydroxylation. So इसमें structure में क्या होगा? The structure of vitamin D consists of a cyclopentane of hydrophenanthine ring. So steroidal ring होगा इसमें. Steroid ring होगा. So structural test. इसमें क्या होगा? Steroid ring, and there are hydroxyl group at C3. Carbon number 3 पे hydroxyl group है. There are 2 double bonds between C5, C6 and C7, C8. 2 double bonds carbon number 5 पे and 6 के बीच में 2 double bond है, और carbon number 7 और 8 के बीच में भी double bonds है. And hydroxycarbon side chain at C17, hydrocarbon side chain. ठीक है, इसमें एक steroid nucleus होगा, that is known as cyclopentane of hydrophenanthine nucleus. In addition to that, at the third position there will be hydroxyl group. Okay, and in between carbon number 5 and carbon number 6 there will be two double bonds. In between carbon number 7 and carbon number 8 again there will be
two double bonds. So cyclopentanol for hydrophenon 3 hydroxyl group and double bonds and C17 position पे क्या होगा हाइड्रोकार्बन साइड चेन. We have seen the structure. ठीक है, बाद में एक बार फिर से देखूंगा. Now next is vitamin E. Vitamin E generally they are known as a tocopherols. They are known as a tocopherols. इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं. Alpha tocopherol, beta tocopherol, gamma tocopherol. So out of that, alpha tocopherol is the most active amongst the vitamin E. Alpha tocopherol. And what is it? It is a 578 trimethyl tocol ring. Okay. So this alpha tocopherol consists of 578 trimethyl tocol ring. And remember, alpha tocopherol is the most active amongst the other vitamins of vitamin E. So alpha tocopherol, beta tocopherol, gamma tocopherol. So you can call them as the vitamins of vitamin E. So out of that, beta tocopherol consists of 5,8 dimethyl tocol ring. And then gamma tocopherol consists of 7,8 dimethyl tocol ring. Delta tocopherol consists of 8 methyl tocol ring. So ठीक है, विटामिन ए में कौन सा रिंग है बीटा आयोनॉन, विटामिन डी में कौन सा रिंग है स्टेरॉइड रिंग, विटामिन ई में कौन सा रिंग है टोकॉल रिंग. नाउ विटामिन के में कौन सा रिंग है, ठीक है, विटामिन के में होता है नेप्थोक्विनोन रिंग. विटामिन के उसका दो तीन टाइप होता है, विटामिन K1 K2 K3. सो ऑल आर नोन एज विटामिन्स ऑफ विटामिन के, K1 K2 K3. सो K3 इज टोटली सिंथेटिक वन. K3 जो है दैट इज अ सिंथेटिक वन and K1 K2 जो है that is known as the natural form. So ring कौन सा है naphthoquinone, remember. So naphthoquinone ring is present in the vitamin K, tocol ring is present in the vitamin E, and here in case of vitamin D steroid ring is present. In case of vitamin A you have beta ion ring. So these are the lipid soluble vitamins and their structures. Now we'll see the next one is the water soluble vitamins. In the vitamin B1 that is known as the thiamine. So thiamine में कौन सा रहेंगे pyrimidine ring plus thiazole ring and methylene bridge. इसके भी there are three structural aspects of this vitamin B1. First one is the pyrimidine ring, second one is the thiazole ring, and third one is the methylene bridge. It is a sulfur containing vitamin thiamine. Vitamin B1 मतलब क्या thiamine, thiam मतलब क्या sulfur containing vitamin. Remember pyrimidine ring, thiazole ring, they are joined together by methylene bridge. We have discussed already, but I am still repeating it again. Okay. Then next one is the vitamin B2. Vitamin B2 known as a riboflavin. It is known as a riboflavin. It is an orange color vitamin compound containing ribose alcohol. Okay, ribose alcohol that is known as the D-ribitol. D-ribitol. इसमें रिंग कौन सा है isoalloxane ring. Isoalloxane heterocyclic ring. That is also known as a flavin nucleus. Isoalloxane ring is also known as a flavin nucleus. तो इसमें देखो ये रिंग्स जो है विटामिन में they are very important. You have to remember the different chemical structure of vitamins and ring present in the vitamin. Okay, because they have already asked in the various exams. GPAT में आता है, नाइपर में आता है, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स बहुत सारे इसमें आते हैं. रिसेंटली जो ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ है आसाम का, उसमें एक क्वेश्चन था इसके बारे में राइबोफ्लेविन के. सो आइसोएलेक्सेन रिंग और फ्लेविन न्यूक्लियस दे आर जॉइंड टुगेदर बाय 1,9 पोजीशन. So D-ribitol मतलब क्या? It is a ribose alcohol. D-ribitol means ribose alcohol and isoalloxane ring. Isoalloxane, ठीक है? Isoalloxane ring joined together by 1,9 position. ये position पे इनका joining हो. Now vitamin B3. Vitamin B3 known as a niacin और nicotinic acid. So यहाँ पे कौन सा ring होगा? Pyridine ring होगा. Pyridine 3 carboxylic acid. Nicotinic acid derivative. Pyridine 3 carboxylic acid ये ring है इसमें, and it occurs in the form of either amide. Okay, it occurs in the form of amide known as a nicotinamide. Now vitamin B6 it is known as a pyridoxine. तो इसमें ring कौन सा होगा? So pyridoxine, or it is also known as a adermine. Chemically it is a 2-methyl-3-hydroxy 4,5-dihydroxymethyl pyridine. इसमें कौन सा ring है? pyridine ring है. Now vitamin B9 it is known as a folic acid. इसमें भी 3 component होते हैं. So folic acid also has a 3 component. First one is a pteridine ring known as a pteridine nucleus. Pteridine nucleus itself is made up of a pyrimidine and pyrazine ring. Para position para-aminobenzoic acid. So second structural component is a PABA, para-aminobenzoic acid, and third component is a glutamic acid. So folic acid में भी 3 कंपोनेंट होते हैं. आपका फर्स्ट वन होता है pteridine nucleus,
ठीक है। दूसरा होता है आपका पाबा, पैरामाइनो ब्यूटारिक एसिड। थर्ड कंपाउंड है ग्लूटामिक एसिड। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ टेरोइल ग्लूटामिक एसिड. So this one is a vitamin B9 or folic acid. Now vitamin B7. It is known as a biotin. Okay, it is a monocarboxylic acid, sulfur containing water soluble vitamin. ठीक है, biotin monocarboxylic acid है इसमें. It's a monocarboxylic acid with sulfur containing complex of sulfur with monocarboxylic acid. That is vitamin B7 or biotin. Now next one is a lipoic acid. It is not actually, it is a vitamin like compound, not a true vitamin. It consists of a thiotic acid. इसमें क्या होता है, थायोटिक एसिड होता है, सल्फर कंटेनिंग फैटी एसिड है ये. ठीक है, इट इज अ फैटी एसिड, सल्फर कंटेनिंग फैटी एसिड. देखो, सल्फर कंटेनिंग फैटी एसिड लिपोइक एसिड, सल्फर कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विटामिन B7 और बायोटिन, एंड सल्फर कंटेनिंग विटामिन थायमिन बी, सल्फर कंटेनिंग विटामिन. याद रखो, सल्फर किसमें, थायमिन में है आपके, बायोटिन में है सल्फर, आपके लिपोइक एसिड में भी सल्फर है. So thiotic acid, sulfur containing fatty acid 6,8 dihydro octadecanoic acid. octadecanoic acid ये क्या है, octadecanoic acid. octa मतलब 8, deca मतलब 10. So 18 carbon atom containing, that is known as the octadecanoic acid. So 18 carbon atom containing fatty acid, octadecanoic acid, and sulfur containing. Okay? So thiotic acid, sulfur containing fatty acid 6,8 dihydro octadecanoic acid, that is the lipoic acid. So this was a short table. Now we'll see the next one, that is the minerals. Sorry, vitamin is remaining. So vitamin C में क्या होता है, vitamin C is water soluble again, and it is known as a ascorbic acid. तो इसमें क्या है, it is a strong acid, enediol lactone. It is a sugar acid, it is known as a sugar acid. याद रखो, sugar acid है, enediol lactone, and it is a strong acid because of the dissociation of this hydrogen at C2 and C3. C2 C3 के हाइड्रोजन जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं विटामिन सी के. दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और इट इज अ एंटीऑक्सीडेंट. ओनली यल एस्कॉर्बिक एसिड इज एक्टिव, यल फॉर्म इज एक्टिव, डी फॉर्म एक्टिव नहीं, याद रखो. नाउ विटामिन B12 is known as a cyanocobalamin. Vitamin B12 is known as cyanocobalamin, and it consists of a first कोरिन रिंग. इसमें क्या है, कोरिन रिंग होता है. तो कोरिन रिंग स्टिक, दैट इज अ 4 reduced and extensively substituted pyrrole ring. GPAT 21 में ये क्वेश्चन आ चुका है, सॉरी GPAT 22 में. तो pyrrole ring, विटामिन B12 में कौन सा रिंग होता है, pyrrole ring. So basically main ring जो है that is a कोरिन रिंग, but कोरिन रिंग itself is made up of 4 pyrrole rings. 4 pyrrole rings in the central portion of molecule surrounded by a single cobalt atom. Cobalt atom containing विटामिन कौन सा है, विटामिन B12. विटामिन B12 में देखो कोरिन रिंग है और उसमें पायरोल रिंग्स होते हैं, 4 पायरोल रिंग, कोरिन रिंग और देन कोबाल्ट एटम. ओके, एंड ये हो गए फर्स्ट स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट. सेकंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट इज जस्ट बिलो द कोरिन रिंग 5,6 डाइमिथाइल बेंज इमिडाजोल राइबोसाइड इज आल्सो. ये रिंग भी है इसमें, 5,6 डाइमिथाइल बेंज इमिडाजोल कनेक्टेड बाय टुगेदर, कनेक्टेड बाय into कोबाल्ट एटम. इसमें और एक है साइनाइड ग्रुप भी है. साइनाइड ग्रुप इज आल्सो बाउंड टू कोबाल्ट एटम बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज साइनोकोबालामिन. कोबालामिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें साइनो है, एंड इट इज अ ओरिजिनल आइसोलेटेड बॉन्ड. मतलब ओरिजिनल साइनोकोबालामिन जो है उसमें साइनो ग्रुप होगा. इफ साइनाइड ग्रुप इज एब्सेंट फ्रॉम विटामिन B12 देन इट इज नोन एज कोबालामाइन. तो साइनो ग्रुप अगर नहीं है विटामिन B12 में तो उसको बोलेंगे कोबालामाइन. अगर साइनो ग्रुप है तो उसको बोलेंगे साइनोकोबालामाइन. देन विटामर्स, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं. जैसे अगर साइनो ग्रुप जो है आपका, साइनाइड ग्रुप जो है, इफ दैट साइनो ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप देन इट इज नोन एज हाइड्रोक्सीकोबालामाइन. और विटामिन B12A, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा है कि बेटा व्हाट इज विटामिन B12A, दैट इज अ हाइड्रोक्सीकोबालामाइन. If you replace that cyanide or cyano group of vitamin B12 by nitro group, so it is known as nitrocobalamine or vitamin B12C. If you replace that group by chloro, known as a chlorocobalamine. If you replace that by sulfate, it is known as sulfactocobalamine. We'll see the structure again. Inositol. Inositol is also a vitamin-like compound, not a vitamin. So it is a myo-inositol or myo-inositol. It is a hexahydrocyclohexane and also known as a muscle sugar. इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है.
which one of the following is known as a muscle sugar? That is a myoinositol. So you can see it is a vitamin, B12 vitamin. Cyanocobalamin का structure होता है ये. So it is known as a choline ring. It is known as a choline ring. It is known as a choline ring. You can see over here. So there are the four pyrrole rings. Four pyrrole ring joined together, and centrally cobalt atom is placed. You have cobalt atom joined together by coordinate bonds. Then cyano group, ये हो गया स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट. दूसरा हो गया साइनो ग्रुप का स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट. तीसरा हो गया बेंज इमिडाजोल. एक बेंज इमिडाजोल रिंग इज अ थर्ड एस्पेक्ट में. इसमें यहाँ पे एस्पेक्ट ग्रुप से शुगर. बेंज इमिडाजोल 5,6 डाइमिथाइल बेंज इमिडाजोल, देन पायरोल रिंग, और टुगेदर दिस इज नोन एज अ कोरिन रिंग. ये सब साथ में अगर है तो उसको बोलेंगे कोरिन रिंग. अगर साइनो ग्रुप रिप्लेस किया हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, दैट इज नोन एज हाइड्रोक्सिकोपेलामाइन. साइनो ग्रुप अगर रिप्लेस किया नाइट्रो से, दैट इज नोन एज नाइट्रोकोपेलामाइन. साइनो ग्रुप अगर रिप्लेस किया क्लोरो से, क्लोरोकोपेलामाइन. साइनो ग्रुप अगर रिप्लेस किया सल्फेट से तो सल्फेक्टोकोपेलामाइन. आर ओके. सो दिस वन इज नोन एज अ बीटा आयोनिन रिंग. so this ring, ये जो रिंग है, दिस इज नोन एज बीटा आयोनिन रिंग. ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनिल, एक मिथाइल दो मिथाइल ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनिल रिंग is known as beta alanine in vitamin A. Now, in case of vitamin D, you can see over here. So it is known as a cyclopentanol per hydropenanthine ring, or it is known as a steroidal ring. ये जो है 17th पोजीशन है. ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है थर्ड पोजीशन पे. We have seen the structural aspect. So next one is a vitamin E. So vitamin E is known as a tocopherol. This ring is known as a tocol. टोकॉल रिंग जो है ये रिंग है टोकॉल रिंग. बाद में ये आइसोप्रोनाइड यूनिट होते हैं. और विटामिन के में होता है आपका ये नेप्थोक्विनोन रिंग. ये जो है ये नेप्थोक्विनोन रिंग. विटामिन के में क्या है नेप्थोक्विनोन रिंग. बाद में आइसोप्रोनाइड नेप्थोक्विनोन रिंग. विटामिन सी क्या है? इट इज द शुगर एसिड. डिसलोकेशन ऑफ हाइड्रोजन 1 and 3. ये जो है दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक. दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एंटीऑक्सीडेंट. सॉरी. बाद में थायमिन में देखो, थायमिन में थायाजोल रिंग है. थायाजोल रिंग ये देखो, थायाजोल रिंग एटोसाइक्लिन. ये पिरिमिडिन रिंग थायाजोल रिंग जॉइन टुगेदर बाय इथिलीन ब्रिज. पे निकोटिनिक एसिड. तो निकोटिनिक एसिड क्या है? पिरिडिन कार्बोक्सिलिक एसिड. पिरिडिन नाइट्रोजन 1 2 3 3 कार्बो पिरिडिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड. बाद में विटामिन B6 पिरिडोक्सिन. तो यहाँ पे भी रिंग है पिरिडिन रिंग. एंड बायोटिन में क्या है? सल्फर कंटेनिंग विटामिन ए. पैराजोल रिंग है और थायोपिन रिंग जॉइन टुगेदर. इमिडाजोल रिंग, सॉरी ये इमिडाजोल रिंग है एंड थायोपिन रिंग. इमिडाजोल प्लस थायोपिन रिंग. एंटोथेनिक एसिड में क्या है? इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. एंटोथेनिक एसिड में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड. बीटा अलानिन यहाँ पे कॉमन एसिड. फोलिक एसिड में मैंने बोला था आपको टेरिडीन रिंग. ये हो गए टेरिडीन रिंग. ये हो गया आपका पावा पैरामोनोमेट्रिक एसिड. एंड ये हो गया आपका glutamic acid. So it is made up of 3 components. You see the minerals. So what do you mean by minerals? So your body needs different kind of organic and inorganic substances for living. So for example, you need organic substances like carbohydrate, proteins, lipids, amino acids. So all these are the organic substances. So along with that, your body need some kind of inorganic substances known as the minerals. So minerals or inorganic elements of your body, they are very small in the proportion. Okay, inorganic constituent of your body, they are present in a small proportion. For example, calcium is only 2% of your body weight, and 0.004% is only cobalt. So inorganic constituents are very less as compared to organic constituents. Okay? They are very important. They have a certain vital role. They are having certain vital role in your body. That's why they need. So minerals are important and they are absolutely essential. They are absolutely essential for existence of organism. Organism के existence के लिए important है minerals. You have different minerals in your body. For example, sodium, calcium, then chloride, then manganese, copper, okay, iron. Right. Out of that, calcium is known as the largest element present in the body. Calcium सबसे ज़्यादा body में होता है बाकी मिनरल्स के कंपैरिजन में. 2% ऑफ बॉडी वेट, याद रखो. नाउ दीज मिनरल्स हैव वाइटल फंक्शन इन योर बॉडी. इसके फंक्शंस होते हैं डिफरेंट. सो व्हाट आर दीज फंक्शंस? फॉर एग्जांपल, सो दीज मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट
they have a certain vital function in your body. So for example, you can see over here. First one is a calcification of bone. Calcium is required for calcification of bone. Again, blood coagulation. There are certain factors which are known as calcium dependent blood coagulation factors. We have seen that fact number 2, fact number 5, fact number 7, fact number 9. These are known as a calcium dependent blood clotting factors. So calcium is required for that. Calcium is required for calcification of bone. Calcium is required for blood coagulation. Calcium is required for neuromuscular transmission. जो nerve impulse transmit होता है that is only dependent because of the cations present in the body जैसे सोडियम हो गया कैल्शियम हो गया nerve का impulse generation जो होता है that is based upon the ions that is based upon the cations ठीक है तो blood coagulation के लिए कैल्शियम लगेगा आपको calcification of bones के लिए कैल्शियम लगेगा फास्फोरस लगेगा एसिड बेस इक्विलिब्रियम एसिड बेस बैलेंस के लिए आपको सोडियम क्लोराइड लग जाएगा फ्लूइड बैलेंस के लिए भी सोडियम क्लोराइड लगेगा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसका रेगुलेशन ऑस्मोटिक रेगुलेशन so these are the functions of minerals in the body some vital functions each and everything is not will each and everything will not be discussed जितना आपका important है जितना essence है जितना extract है जितना summary है for your GPAT exam Niper exam that I have summarized over here that are going to discuss only not each and everything okay? So these are some vital functions of minerals so minerals are very important for the existence of organism ये क्या याद रखो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आपका 2% ऑफ बॉडी वेट कैल्शियम इज प्रेजेंट इन द कैल्शियम प्रेजेंट इन बॉडी इज 2% ऑफ बॉडी वेट एंड मतलब हाईएस्ट अमाउंट में कैल्शियम होता है और लोएस्ट अमाउंट में क्या होता है कोबाल्ट दैट इज प्रेजेंट एज अ 0.000 again these minerals are very important constituent of biological important component biological component होते हैं जैसे आपका कुछ प्रोटीन हो गया so there are certain proteins there are certain vitamins there are certain enzymes okay which are the biological components and these minerals also are important constituent of these biological compounds minerals जो होते हैं वो biological compound के भी constituent होते हैं जैसे आपका hemoglobin is a protein so in that you have ferrous okay so किसमें है hemoglobin में so then again thyroxine T3 T4 these are the hormones thyroxine hormones in that also you have inorganic iodine iodine is an important constituent of your thyroxine hormone ferrous is the important constituent of hemoglobin likewise that zinc जो होता है zinc is important constituent for insulin vitamin B12 में cobalt atom होता है cobalt is the important constituent of vitamin there are numerous vitamins which are nothing but the sulfur containing vitamins so sulfur is an important constituent for thymine biotin lipoic acid and coenzymes these minerals will also act as a cofactor for certain enzymes enzymes के लिए cofactor भी as act करेंगे for example copper magnesium zinc calcium copper magnesium zinc and potassium these are acting as a coenzymes or coenzymes for various biochemical processes for example आपने glycolysis देखा होगा तो उसमें magnesium as a cofactor लगता है copper as a cofactor लगता है so these minerals they have different role okay they are involved in the calcification of bone they are involved in the neuromuscular transmission they are involved in the blood coagulation process acid base balance osmoregulation fluid balance important component of some proteins like hemoglobin उसमें ferrous होता है they are also important component of certain hormones for example thyroxine इसमें iodine होता है they are also important constituent of this insulin hormone zinc होता है इसमें cobalt cyanocobalamin में cobalt होता है sulfur containing vitamins में क्या होता है sulfur होता है जैसे thiamine हो गया biotin हो गया lipoic acid coenzyme okay minerals also act as a certain cofactor for a enzyme catalyzed reaction for example copper magnesium zinc and potassium they are also important constituent of enzymes certain enzymes structure will also have in these minerals कुछ enzymes ऐसे हैं कि उनके structure में क्या रहेगा minerals रहेंगे जैसे this cobalt molybdenum then selenium okay so there are certain enzymes which contains these uh, inorganic metals okay? Next so now these minerals are classified into two types depending upon their requirement in to the body बॉडी के उसका रिक्वायरमेंट कितना होता है कितना चाहिए बॉडी को उसके बेसिस के ऊपर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं सो दीज मिनरल्स
they are classified either into macro minerals or micro minerals. Macro minerals or and micro minerals. There are two categories. Macro means large. Macro means क्या large. Micro means क्या small. तो macro means large मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लगेगा बॉडी को. Micro means small मतलब ये थोड़ा कम क्वांटिटी में लगेगा. तो macro minerals they are also known as principal minerals. Macro minerals they are also known as principal minerals. कुछ चीजें हैं जो बोलता हूँ मैं आपको उसको राइट डाउन करते हैं. Macro minerals means these are the minerals they required less than 100 milligram per day for body. Sorry, they require more than 100 milligram per day for body. कोई मिनरल आपको बॉडी के लिए 100 मिलीग्राम से ज़्यादा लगता है तो उसको बोलेंगे मैक्रो मिनरल्स. व्हाट डू मीन बाय मैक्रो मिनरल? Macro mineral means those minerals which require 100 milligram or more daily. So if daily requirement of mineral is 100 milligram or more, then it is known as a macro mineral or principal mineral, and they constitute about 60 to 80% of the body. बॉडी में जितने इनऑर्गेनिक मिनरल होते हैं उसका 60 to 80% क्या होगा? मैक्रो मिनरल होगा. फॉर एग्जांपल कौन से मैक्रो मिनरल्स? कैल्शियम, phosphorus, magnesium, potassium, chloride, sodium, sulfur. These are known as macro minerals. तो क्वेश्चन आपको ऐसे आता है कि one of the following is not a macro mineral, one of the following is not a principal mineral. तो याद रखो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, potassium, chloride, sulfur. These are macro minerals. Now micro minerals means what? They are required in the body in a less amount. Okay, so if they require the recommended daily allowance is less than 100 milligram per day. माइक्रो मिनरल्स का क्या है? मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे उसका रिक्वायरमेंट होता है. सो माइक्रो का क्या है? लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे. So they are known as a micro minerals. They are further divided into different categories. For example, first one is essential trace element. Essential trace element. So iron, copper, manganese, zinc, molybdenum, cobalt, and selenium, chromium. So these are known as essential trace element. Then possibly essential trace element like nickel, then vanadium, calcium, and barium. Non-essential trace element. So aluminium, lead, mercury, boron, silver, bismuth. So तो एल्यूमिनियम तो नहीं, लीड तो नहीं रहेगा, मर्क्यूरी भी नहीं रहेगा, बोरॉन भी नहीं रहेगा, लेकिन कभी कभी सिल्वर रहता है बॉडी. दे आर नॉन एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट. इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट कौन से है ये क्या रखो? आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है, मोलिब्डेनम. तो आयरन तो आपका हीमोग्लोबिन के लिए लगता है. कॉपर किसके लिए लगता है? एज अ कोएंजाइम. मैंगनीज कोएंजाइम. जिंक इंसुलिन के लिए. मोलिब्डेनम एज अ कोएंजाइम एंड एंटीऑक्सीडेंट. कोबाल्ट किसमें? विटामिन B12 में. सेलेनियम जो है इट इज एंटीऑक्सीडेंट, ये भी कुछ प्रोटीन में पाया जाता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट. पॉसिबली एसेंशियल निकेल, वेनेडियम, कैडमियम एंड बेरियम. नॉन एसेंशियल में एल्यूमिनियम, लीड, मर्क्यूरी, बोरॉन, सिल्वर एंड बिस्मथ. ठीक है. तो इट इज जस्ट अ क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स का क्लास क्या है इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. What is macro, what is micro, what is essential trace, what is non-essential trace element. Now next we'll see. So I have summarized one table over here, so you can quickly revise all the important elements, important inorganic chemicals, important inorganic elements, then its function, efficiency, recommended dietary allowance, and sources of that. You can see in the first column elements, second column functions, biological functions. In the third column deficiency है उसका, deficiency अगर होगा तो क्या होगा. ठीक है. In the fourth column recommended daily allowance and source क्या है उसका. ठीक है. First one is the calcium. First one is the calcium. Obviously calcium is very important. It is a macro element. ठीक है. Macro element. Calcium is required for the different functions. What is the function? Biochemical function of calcium in the body. So it is required for formation of bones and teeth. So formation of bones and teeth. So whatever bones are there, so ossification, that is the process of formation of bones is known as ossification or calcification. So osteocyte जो होते हैं bone के cell, so in that your calcium helps. Calcium is required for calcification of bone, and after calcification of bone,
bone will become strong. Okay, so calcification of bone, teeth. Then again, this calcium is required for muscle contraction. Is also important for muscle contraction. This is होता है actin myosin. You see, if you have seen the physiology of muscle contraction, so there will be a release of calcium from sarcoplasmic reticulum of the cell, and that released calcium will interact with the troponin, that is the actin and myosin filament of the muscle, and then muscle will contract. Okay, so that's why it is involved in the muscle contraction. Again, this calcium is important for neurohumoral transmission. नर्व का impulse generate होने के लिए, transmission के लिए क्या है, calcium important है. Okay, so these are the biochemical rules. So there are more biochemical rules. If you want to read, you can read from Biochemistry by Sachin Jadhav. Okay. Now deficiency, if there is deficiency of this calcium, अगर इसका deficiency हुआ है तो क्या होगा? There are two major deficiency, that is a rickets and osteomalacia. And osteo deficiency of calcium leads to rickets in the children. ये क्या याद रखो, rickets होगा किसमें होगा, चिल्ड्रंस में होगा rickets. ओस्टियोमलेसिया किसमें होगा, अडल्ट्स में होगा. ओके, ओस्टियोमलेसिया अडल्ट्स में होगा, रिकेट्स किसमें होगा, चिल्ड्रंस में होगा, ओस्टियोमलेसिया अडल्ट में होगा. डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम रिजल्ट इन द रिकेट्स इन द चिल्ड्रन एंड ओस्टियोमलेसिया इन द अडल्ट्स. ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी. चिल्ड्रंस में रिकेट्स होगा और ओस्टियोमलेसिया adults में होगा. उसमें उसका मतलब improper calcification of bones will become fragile and bones will not have a strength. कि bones fragile होंगे और easily break होंगे. Osteomalacia rickets. And osteoporosis means uh, inadequate mineralization of your bones. Osteoporosis मतलब आपका जो bones है वो easily break हो जाएगा. Again वही. So it is also type of that improper mineralization of bone. Then recommended diet daily allowance कितना है? Daily calcium कितना चाहिए आपको? 8 to 1 gram per day. Daily calcium कितना होना चाहिए? 0.8 to 1 gram per day, means 800 milligram to 1 gram per day. And it is found in the milk and milk product, green leafy vegetables and beans. Beans मतलब दाने, जैसे आपका सोयाबीन हो गया या फिर आपका जो भी है चवली चिबिया हो गए, that means calcium. Okay. Next mineral is a phosphorus. So again it is very important for your bone formation of bones. So along with the calcium it is important for mineralization of bone. Bone में phosphorus भी होता है. Mineralization of formation of bone and teeth, nucleic acid and nucleotides. Okay, so nucleic acid में क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए, तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो उसमें फॉस्फोरस रहेगा. न्यूक्लियोसाइड्स एंड कोएंजाइम्स, अगेन हाई एनर्जी फॉस्फेट is also required. This is the biochemical role of phosphorus. Now again deficiency is rickets and osteomalacia. Rickets occurs in the children, osteomalacia in the adult. Recommended daily allowance is the same, 0.8 to 1 gram per day. Okay, it is found in the milk, cereals means कड़ धान्य, जो भी धान्य है आपका, जैसे wheat हो गया, barley हो गया, ज्वार हो गया, so that is the cereals. Then leafy vegetables, green leafy vegetables, that is also a source phosphorus. The next one is the magnesium. So it is a content of bones, again teeth. It is a cofactor for certain enzymes, like there are different enzymes in the body which are dependent on magnesium. Magnesium के लिए cofactor रहेगा magnesium. For example, kinase enzyme. So kinase enzyme is required, magnesium as a cofactor. So if there is deficiency of this manganese, what will happen? Neuromuscular weakness and irritation. भी प्रोसेस है एंजाइम कैटलिस्ट प्रोसेस, जो मैग्नीशियम डिपेंडेंट है वो प्रोसेस क्या होगी, बंद हो जाएगी. रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना है, 300 to 350 मिलीग्राम पर डे. इट इज फाउंड इन द सीरियल्स, वेजिटेबल्स, देन कोकम फ्रूट्स एंड मिल्क. आर यू गेटिंग और नॉट? समझ रहा है नहीं समझ रहा है? हेलो. नेक्स्ट वन इज द सोडियम. Sodium is known as a extracellular cation. Remember, sodium is known as a extracellular cation. सोडियम को क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन. और पोटेशियम को क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर कैटायन. क्लोरीन को क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर एनायन. जो सोडियम के बारे में देखो,
Sodium is known as the content of extracellular fluid. Sodium is the important content of extracellular fluid. It is involved in the acid-base balance, osmotic pressure regulation, and muscle contraction function. It is also involved in the impulse generation. Sodium is very important for impulse generation. It is also present in the heart for impulse generation. का deficiency normally होता नहीं है. So deficiency of the sodium normally does not happen. Deficiency of sodium only happens in case of severe vomiting and severe diarrhea. अगर severe electrolyte loss अगर आपकी blood body का होता है तो उसमें सोडियम का deficiency. Recommended diet daily allowance कितना recommended daily allowance 5 to 10 ग्राम पर डे. आप जो नमक खाते हो उसमें सोडियम क्लोराइड होता है उसमें से ही मैक्सिमम आ जाता है. बिना नमक के खाना खा ही नहीं सकता. 5 to 10 ग्राम पर डे. So it is found in the table salt and salt in the food. ठीक है. जो आप खाने में सॉल्ट होता है उसमें सोडियम पाया जाता है और जो सॉल्ट होता है नॉर्मल सॉल्ट टेबल सॉल्ट तो इज पोटेशियम. सो इट इज अ कंटेंट ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड. यहाँ पे याद रखो सोडियम क्या है कंटेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. पोटेशियम क्या है कंटेंट ऑफ इंटरसेलुलर फ्लूइड. इट इज अगेन इन्वॉल्व इन द एसिड बेस रेगुलेशन ऑस्मोटिक प्रेशर फंक्शन एंड मसल फंक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन. इसका डिफिशियंसी अगर हो गया तो मसल वीकनेस हो जाएगा मेंटल कंफ्यूजन हो जाएगा. 3 to 4 ग्राम पर डे डेली रिक्वायर्ड. इट इज फाउंड इन द fruits, nuts and vegetables. Then next one is chlorine. It is known as an intracellular anion. It is known as sodium is known as extracellular cation. Potassium is known as intracellular cation. Chlorine is known as intracellular anion. Regulation of acid-base balance and formation of HCl in the stomach. So इसका deficiency भी नहीं होता है. Normally deficiency इसका भी नहीं होता है. So almost unknown because the sufficient amount of chloride is provided in the normal diet. जैसे सोडियम का भी sufficient amount अपन लेते हैं डेली क्योंकि अपन डेली नमक खाते हैं. नमक में सोडियम भी होता है क्लोराइड भी होता है पोटेशियम भी होता है. Most unknown. Recommended daily allowance क्या है 5 to 10 ग्राम पर डे. It is found in the table salt. Next one is sulfur. So it is a content of amino acid. जो सल्फर containing amino acid है उसमें भी ये मिनरल होता है. Then it is also present in the vitamins. Okay, sulfur containing vitamins, biotin and pantothenol. The deficiency is unknown and recommended daily allowance is not specified. Okay, it is found in the sulfur containing amino acid and vitamin. Then we'll see the next. तुम short में आपको बोल रहा हूँ मैं और इतना ही important है. Next is again same. Okay, so element, function, deficiency, recommended daily allowance and sources. So iron. So you know that iron is a component of your heme. It is a content of your heme. Heme is nothing but the iron containing protein complex. That because of that heme, there is a formation of hemoglobin. Okay, hemoglobin and myoglobin. Myoglobin is found in the muscle. Cytochrome. Okay, cytochrome उसमें भी iron लगता है. Function. What is the function? Biochemical function to carry the oxygen or oxygen transfer in the biological oxidation also. So oxygen transport is the main function of hemoglobin. Then biological oxidation के लिए भी iron लगता है. और भी roles होते हैं. You can read from सत्यनारायण या फिर next lecture में अपन थोड़ा सा और एक टेबल बनाएंगे. तो यहाँ पे इसका deficiency देखो. So if there is deficiency of iron, so what will happen? Hypochromic and microcytic anemia. Hypochromic, hypo मतलब क्या? Hypo मतलब less, chromic मतलब कलर. So आपका ब्लड का आरबीसी का जो कलर है that will become light. So hypochromic and microcytic. Micro means less, cytic means cell. So cell का साइज कम हो जाएगा. Okay. So microcytic anemia means decrease in the size of RBC. Okay. Anemia means decrease in the hemoglobin level of your body. So iron deficiency will result in the iron deficiency anemia, hypochromic and microcytic anemia. So what is the recommended daily allowance? 10 to 15 milligram per day. Now this iron is found in this meat. जो मटन होता है उसमें मिलेगा, लिवर में मिलेगा, हार्ट में मिलेगा, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा. देन आयरन यूटेंसिल. ठीक है, आयरन यूटेंसिल मतलब क्या? आप भी रोटी किसके ऊपर बनाते हो? आप रोटी पैन के ऊपर बनाते हो. पैन इज मेड ऑफ आयरन. ठीक है, उसमें भी आयरन का कुछ ट्रेसेस ऑफ आयरन विल गो इनटू योर फूड.
जो आप कढ़ाई यूज करते हो वो भी आयरन से बना है, सो आयरन यूज। नेक्स्ट वन इज अ कॉपर. So copper is a content of it is a constituent, it is a required for, it is required for various biochemical. Next one is a copper. So copper is very important. It is a coenzyme. It is a sorry. It is a cofactor for various biochemical processes. Content of enzyme cytochrome C oxidase. Cytochrome C oxidase enzyme जो है उसका cofactor है. It is also important for catalysis tyrosinase. Tyrosinase का जो एंजाइम है, टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म करने वाला एंजाइम है, उसको कॉपर एज अ कोफैक्टर लगता है. आयरन ट्रांसपोर्ट के लिए भी कॉपर लगता है. कॉपर इज आल्सो अगेन important cofactor for the enzyme like cytochrome C oxidase, catalase tyrosinase. ये catalase एंजाइम जो है उसके लिए भी कोफैक्टर है और टायरोसिनेज एंजाइम जो है उसके लिए भी कोफैक्टर है. So principally this copper is a cofactor and also involved in the iron transport, and that's why deficiency result in the anemia and Menkes disease. याद रखो Menkes disease, एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया. Menkes disease deficiency of that is a copper. Menkes disease आप Menkes disease क्या होता है, उसका सिम्टम्स क्या है, वो आपको एडिशनली पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो. Now recommended daily allowance 2 to 3 gram per day. It is found in the meal. It is found in the meat, cereals and vegetables. कहाँ पे मिलेगा ये? और next one is iodine. You know that iodine is a very important constituent for thyroid hormones. So whatever thyroid hormone is T3, T4, triiodothyronine and tetraiodothyronine. These are the thyroid gland hormones. So iodine is the important constituent of that. बायोकेमिकल रोल मालूम है, बाकी जितना भी बायोकेमिकल रोल होता है थायराइड हार्मोन का उतना सब आयोडीन का भी आएगा. डेफिशिएंसी रिजल्ट इन द क्रिएटिनिज्म, goiter and myxedema. Deficiency of iodine result in the cretinism, goiter and myxedema. Dietary allowance देखो 150 to 200 microgram per day. It is present in the iodized salt and seafoods. ठीक है. मैग्नीज क्या है? मैग्नीज is recorded as a cofactor. Deficiency is unknown and 2 to 9 milligram per day is recommended daily allowance found in the cereals and vegetables. Next one is zinc. So zinc is required as a cofactor for various enzymes like aldehyde dehydrogenase, carbonic anhydrase, then lactate dehydrogenase. These are the enzymes which require as a zinc as a cofactor. Again, this zinc is required for insulin also. So deficiency result in the growth retardation, poor wound healing and hypogonadism. Remember this zinc is also important for your immunity. ये क्या करेगा? आपको इम्यूनिटी बढ़ा देगा जिंक. आपने देखा होगा कोरोना वायरस के इसमें जिंक का टैबलेट दे दिया 10 to 15 milligram per day daily allowance. Daily recommended daily allowance. It is found in the meat, fish and milk. Lidum is important constituent of enzyme xanthine oxidase. Deficiency is unknown in the vegetable. सिर्फ बायोकेमिकल फंक्शंस थोड़ा याद रखो, डेफिशिएंसी याद रखो, बाकी कुछ कोर्स वगैरह नहीं पूछते मैक्सिमम. ये सिर्फ कभी कभार पूछ लेते. कोबाल्ट. नेक्स्ट वन इज कोबाल्ट. So it is a content of vitamin B12 and important for the formation of RBCs, erythrocytes. So deficiency will result in the anemia known as the pernicious anemia. Pernicious anemia or vitamin B12 deficiency anemia. कोबाल्ट का डेफिशिएंसी अगर हो गया, कोबाल्ट का डेफिशिएंसी रिजल्ट इन द pernicious anemia or vitamin B12 deficiency anemia. Recommended daily allowance क्या है? 5 to 8 microgram per day. It is found in the foods of animal origin. जो मटन चिकन होता है इसमें ये मिलेगा कोबाल्ट. विटामिन B12 मिलेगा और उसमें कोबाल्ट मिलेगा. फ्लोरीन. So it is important for proper formation of bones and teeth. ठीक है. It is also known as anti caries agent. जो डेंटल कैरीज है उसमें ये हेल्प करेगा, डेंटल कैरीज नहीं होना है. So it is also known as anti-caries agent and it is important for formation of bones and teeth. So deficiency of this fluorine result in the dental caries. यहाँ पे देखो dental caries and osteoporosis. Deficiency of this fluorine result in the dental caries and osteoporosis. Recommended daily allowance कितना है? 2 to 4 nanogram. देखो ये बहुत ही trace element है nanogram. It is found in the drinking water. Chlorine किसमें आता है? Drinking water. Selenium is a again
essential trace element. So it acts as an antioxidant along with the vitamin C. Ascorbic acid के साथ में antioxidant as a function करेगा body में. It is again a constituent of glutathione peroxidase enzyme and selenocysteine amino acid. Constituent है इसका. ठीक है. तो deficiency result in the muscular degeneration, muscle loss होगा. Deficiency of selenium result in the muscular degeneration and cardiomyopathy. जो मायोकार्डियम में वो भी कम हो जाएगा. डेली अलाउंस कितना है? डेली अलाउंस देखो 50 to 200 microgram per day. It is found in the meat and seafood. Next one is chromium. Chromium is important constituent for insulin function. It has a glucose tolerant factor. Deficiency result in the impaired glucose tolerance. Dietary allowance is 10 to 100 microgram per day and found in the beavers, yeast and meat and whole grains. So this is just a and their biochemical function deficiency and sources. This was regarding